Assalamu alaikum, dear student. I'm Dr. Muhammad Majid, and today I'm going to discuss again the very important conceptual question asked by the students. So already I have written that question in order to save the time. Question number 1 is, that is again the same question as we did in our previous lecture. So you study that lecture, and again if there is any question then you can ask again. So the question 1, that's related with the cube. So इससे पहले लेक्चर में I have solved different question related with the cube and how you will use the Gauss's law in order to find out the net electric flux if the charge is at the center of the cube, at the corner of the cube. So different cases हमने study किए थे. Again question 1 asked by the student, a point charge Q is placed at one corner of a cube. ये पार्ट फर्स्ट जो है हमने किया था इससे पहले लेक्चर में डिटेल में. क्वेश्चन नंबर 3 जो था, सो अ चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट वन कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब. टोटल क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ईच फेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग द चार्ज, जहाँ पे चार्ज हो तो स्पेस पे आपके पास क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा? ईच फेस ऑफ क्यूब नॉट कंटेनिंग द चार्ज. सो बी एंड सी पार्ट्स दिस आर न्यू फॉर यू. ऑलरेडी आई डिड दिस वन. ये जो पार्ट फर्स्ट है already I did it. So how, let me discuss it again. You have a cube and you have another charge, like this yellow ball. This is a charge Q and it is placed at the corner of the cube. So what will be the electric flux through the cube? So again मैंने आपको बताया था, अगर आप इसी चार्ज को अगर आपने इनक्लोज करना है, then this charge comes at the center of the 8 cubes. तो आपने 8 further cubes इसके साथ 7 एक 1 ये हो गया और 7 further आपने cubes लगाने होंगे, like this 1 2 3 4 and 4 below. So 8 cubes. So this charge is enclosed at the center of the 8 cubes. You have a cube, clear, and the charge is here at this A point. You have a charge at the corner, clear. So अगर आपने इस चार्ज को enclose करना है, you need further cubes. So this charge comes at the center of the 8 cubes. So again if you remember हमने यही पार्ट डिस्कस किया था. सो गॉसेस लॉ जो है, that is net electric flux that is equal to Q by epsilon naught. Charge enclosed by the surfaces divided by epsilon naught. So यहाँ पे अगर कॉर्नर पे हो, this net electric flux जो होगा, this is equally shares among the all 8 जो क्यूब्स है, क्योंकि ये चार्ज सेंटर पे आएगा 8 क्यूब्स के. ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इट. यू नीड समथिंग लाइक क्यूब लाइक दिस here and at the front. So net electric flux थ्रू सिंगल क्यूब क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 8 क्यूब्स. 8 क्यूब्स पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? Q by epsilon naught. So सिंगल के लिए क्या होगा? फॉर सिंगल क्यूब that is equal to Q by 8 epsilon naught. That is the correct answer, Q by 8 epsilon naught. Already I did it. Next, this part, each face of cube containing the charge. This yellow one, this is the charge and this is the cube. So अगर आप देख ले, total number are 6 faces. 6 faces है एक क्यूब में. So ये चार्ज इनक्लोज है कितने फेसेस में? This one 1 2 and 3. Clear? 1 2
एंड दिस वन 3. सो 3 पैसेज में चार्ज इनक्लोज है. और अगर आप देख लें एरिया का जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग थ्रू दिस पैसेज. जहाँ पे ये चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पे है, तो ये फेस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं होंगे, बिकॉज हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया का जो डायरेक्शन है इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस. ऑलरेडी हमने पढ़ा था. यू हैव यहाँ पे इस एरिया का डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है. सो देयर इज एंगल बिटवीन ऑल जो 3 पैसेज हैं, ईच पेस ऑफ क्यूब कंटेनिंग द चार्ज. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा दैट्स बी पॉट, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, बिकॉज द थीटा इज 90 degree between E and A, remember. So flux, you know, flux is E dot A, EA cos of theta. So if theta is 90, cos 90 is 0, so this flux is 0. Clear? So second part यहाँ पे ये 0 होगा. Next, each phase, this one, each face of cube not containing the charge. Total number are 6 faces. 3 faces contain this charge and the other 3 faces do not contain this charge. So other 3 faces पे flux क्या होगा सिंगल एक पे. So total flux क्या है? This is Q by epsilon naught through the whole cube. टोटल क्यूब पे जो फ्लक्स है डेट इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. अब 3 पेसेस पे फ्लक्स 0 है, तो बाकी जो 3 है उस पे फ्लक्स क्या होगा? सो दैट वुड बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. सो सी फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3 फेसेस they do not contain the charge. वो फेसेस जहाँ पे चार्ज नहीं है, the other 3. क्लियर? यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे जहाँ पे चार्ज नहीं है, this yellow one is the charge. So that is equal to this one Q by 8 epsilon naught. क्लियर? टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब इज this one. सो 3 पे तो 0 है, तो बाकी 3 पे यही फ्लक्स है, क्यों बाय 8 एप्सिलॉन नॉट. सो सिंगल फेस पे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिंगल फेस दैट इज इक्वल टू क्यूब 3 पे डिवाइड कर दे 24 epsilon naught. So that is the correct answer. Each face of cube not containing the charge. So the correct option is Q by 24 epsilon naught. Next question, that is easy one. A cylinder is placed in a uniform electric field parallel to the cylinder axis. Find the net electric flux. So again, that is very easy. This question is asked by a student. So if you have any cylinder, yes, this is a cylinder, और इस cylinder को आपने uniform electric field में रखा है. So net electric flux क्या होगा? So again you have a cylinder, और इस cylinder को आपने electric field में रखा है. क्लियर? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है पासिंग थ्रू दी सिलेंडर का जो एक्सेस है. तो द क्वेश्चन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस होल सिलेंडर. सो अगेन द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स वुड बी 0. क्लियर? यू कैन फाइंड आउट. यहाँ पे जो एरिया का डायरेक्शन है, लेट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट इज ई. यहाँ पे जो फ्लक्स है इस सरफेस है, लेट दिस इज फ्लक्स पाई 1. यहाँ पे जो सरफेस 2 है, दिस इज 1 2, यहाँ पे फ्लक्स 2 है, और एक ये सरफेस अगर आप कंसिडर करें, लेट दिस इज फ्लक्स पाई 3. सो टोटल फ्लक्स क्या है? दैट इज 0. यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन ये है, क्लियर? नॉर्मल. यहाँ पे एरिया का डायरेक्शन ये है. सो इन वन केस द एंगल इज 180 degree and in the other case the angle is 0. So flux pi 1, that is something minus EA, flux pi 2
it is EA and again यहाँ पे E और A के दरमियान थीटा 90 है. So the flux pi 3 it is 0, थीटा is 90. So total flux क्या होगा, आप सबको ऐड कर दें, net electric flux pi 1 pi 2 pi 3 that is 0. Clear? That is one thing. Again field आपने outside apply किया है, that is constant. So field line जितने enter होते हैं उतने outside चले जाते हैं. ठीक है, field entering and leavings are equal. So again the total flux is 0. क्वेश्चन को उसी तरह भी आप देख सकते हैं. सो द फ्लक्स इज 0. अगेन यहाँ पे जो फील्ड होगा इट इज़ माइनस ई ए, फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में, एरिया डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, ई ए काज ऑफ थीटा काज 180 और यहाँ पे अगेन काज 0 सो प्लस और यहाँ पे थीटा 90. सो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा अगर आप किसी सिलेंडर को इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखते हैं. नेक्स्ट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट of a unit positive charge. That's again very simple question. Total electric flux coming out of a unit positive charge kept in air. आपके पास a unit positive charge है. unit positive charge mean कि चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है. solution question 3, this is question 3 solution. गिवन्स क्या है, चार्ज क्यों जो है इट इज 1 कूलम यूनिट पॉजिटिव चार्ज. सो इट इज 1 कूलम यूनिट मीन 1 कैप्ट इन एयर. फ्लक्स क्या होगा, यू कैन इजीली फाइंड आउट इज गॉसेस लॉ क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट. इट इज एयर और वैक्यूम सो इट इज एप्सिलॉन नॉट. यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 1 है एप्सिलॉन नॉट. सो द करेक्ट आंसर वुड बी एप्सिलॉन नॉट -1. Clear? So you can put it here. अगर आप चार्ज की वैल्यू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, द आंसर वुड बी एप्सिलॉन नॉट -1 अगर आपके पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. Clear? So that is again for today, and tomorrow we will discuss the application of the Gauss's law, how we can find out the electric field intensity for different cases. So okay, bye.